Hi, I'm Shivani. Welcome back. Today I'll discuss the main points of the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris, followed by the rhyme scheme of the poem and the figures of speech used in the poem. Let's start with the main points. The poet has brought out a contrast between the life of a tiger in the zoo and a tiger in its natural habitat. The poet conveys the plight of a caged tiger, which is walking inside its small cage. The tiger is in quiet rage. It's helpless as it is confined to a small concrete cell. It cannot show its strength. पोएटिक टाइगर की दशा के बारे में बता रहे हैं. टाइगर एक कंक्रीट के सेल में बंद है. टाइगर बहुत ही गुस्से में चुपचाप केज के अंदर चहलकदमी कर रहा है. Poet further says the tiger should have been in its natural surroundings, sliding behind the long grass, waiting for its prey, the fat deer, to pass the water hole. पोइट कहते हैं इस समय टाइगर को जंगल में घास के पीछे अपने शिकार जो फैट डियर हैं उसके लिए बैठे होना चाहिए था जब वो डियर पानी पीने के लिए वहाँ से गुज़रते हैं. द टाइगर शुड बी snarling around the houses situated at the edge of the jungle and terrorizing the villagers by showing his fangs and claws. टाइगर को जंगल के पास रहने वाले लोगों को दहाड़ कर अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाकर डराना चाहिए था. But the poor beast is locked in a concrete cell. His strength is of no use now. He's just walking in rage, ignoring the visitors who have come to the zoo to see him. At night, when the tiger is alone, he can hear the patrolling cars. With his shining eyes, he looks at the shining stars, perhaps thinking about his freedom. टाइगर कंक्रीट सेल में बंद है. वो कुछ नहीं कर सकता है. जो लोग उसे देखने आए हैं उनकी तरफ वह ध्यान नहीं देता है. रात को वो आखिरी आवाज़ गश्त लगाने वाले गाड़ियों की सुनता है. वो अपनी चमकती आँखों से चमकते तारों को देखता है. शायद वो अपनी फ्रीडम के बारे में सोच रहा है. Now let's look at the rhyme scheme. The rhyme scheme is A, B, C, B throughout the poem. The last word of the second and fourth line rhyme with each other, whereas the last word of the first and third line do not rhyme with each other. The same pattern is followed throughout the poem. अब आप देखिए stripes and quiet. फर्स्ट एंड थर्ड लाइन के जो लास्ट वर्ड है वो राइम नहीं कर रहे हैं. तो A and C they do not rhyme, whereas cage and rage, last word of second and fourth line, they rhyme with each other. So A, B, C, B, that is the rhyme scheme. और पूरे पोएम में यही rhyme scheme follow हुआ है. Next we come to the figures of speech. First is personification, when human qualities are given to non-living things, animals and plants. So the poet refers to the tiger as he in the poem. The tiger has been personified. तो ह्यूमन क्वालिटीज़ जब हम नॉन लिविंग थिंग्स एनिमल्स या प्लांट्स में डाल देते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. और पोइट ने टाइगर को ही करके रेफ़र किया है. सो टाइगर हैज़ बिन पर्सोनिफाइड. नेक्स्ट इज oxymoron, when two words that are opposite in meaning are used to convey an idea or thought. दो वर्ड्स ऑपोजिट मीनिंग में हैं और उन दोनों को यूज़ किया जाता है एक साथ किसी आइडिया या थॉट को कन्वे करने के लिए. सो द एग्जाम्पल इज इन हिज क्वाइट रेज. क्वाइट मतलब चुपचाप शांत, रेज मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा. So these two things are opposite and the poet has used quiet rage. This is an example of oxymoron. Next is allotation. Allotation is repetition of consonant sound in the beginning of the words close by. तो consonant sounds का repetition
वर्ड के शुरुआत में जो वर्ड्स पास पास होंगे उनके शुरुआत में सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स अगर होता है तो उसे एलोटेशन कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट. So there's repetition of each sound in he and hears. Next is his strength behind bars. So B sound in behind and bars. Where plump deer pass. So P sound in plump and pass. Next is metaphor, when two unlike things are directly compared without the use of the words like as or like. तो दो अनलाइक चीज़ों को जब कंपेयर करते हैं और कंपैरिजन के टाइम हम एज या लाइक वर्ड इन दोनों वर्ड्स में से किसी भी वर्ड को यूज़ नहीं करते हैं तब इसे मेटाफोर कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर द पॉज ऑफ द टाइगर आर कंपेयर टू पैड्स ऑफ वेलवेट. तो टाइगर के पॉज को वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया है, पंजों को वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया है. Next is enjambment, when a line continues into another line to convey an idea or thought. जब एक लाइन दूसरे लाइन में कंटिन्यू होता है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है एक ही लाइन में, तो वो एक लाइन दो लाइन इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है. Then it is known as enjambment. So example is he stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet rage. तो आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस 4 हिस्सों में बटा है, 4 लाइन्स में बट गया है. So this is enjambment. So you'll find more examples of enjambment in the poem. Then consonants. When consonant sounds are repeated in words that are close by. तो कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होते हैं वर्ड्स में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो शुरुआत में ही होने चाहिए, वो बीच में भी हो सकते हैं, आखिर में भी हो सकते हैं. सो द एग्जाम्पल्स आर स्टॉक्स हिज स्ट्राइप्स. सो यू कैन सी एस हैज़ बिन रिपीटेड इन स्टॉक्स, हिज एंड स्ट्राइप्स. देन हिज स्ट्रेंथ bars. तो S sound has again been repeated in his strength and bars. Then next is assonance. When vowel sounds are repeated in words that are close to each other. Consonants में consonant sounds repeat होते हैं और assonance में vowel sound repeat होते हैं. For example, in his vivid stripes. So you can see the repetition of E sound in his vivid. Then and stars with his brilliant eyes. So again, I sound, E sound has been repeated in with his brilliant. Then next is imagery. When the description by a writer or poet appeals to our senses. जब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने वो दृश्य दिखता है, या वी कैन हियर द साउंड के बारे में लिखा है तो हमें लगता है कि वो साउंड में सुनाई दे रहा है, या टेस्ट वी कैन फील द टेस्ट, देन दिस इज़ नोन एज इमेजरी. सो द एग्जाम्पल इज ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. सो व्हेन वी रीड दिस लाइन वी कैन सी अ टाइगर in his vivid, clear stripes, walking. He should be lurking in shadow. This is again an example of imagery. तो जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि टाइगर चुपचाप बैठा हुआ है अपने प्रे के लिए. So this also you can imagine. The picture comes into your mind. तो आपको लगता है कि आप उस दृश्य को देख रहे हैं, या अगर राइटर और पोइट किसी साउंड या टेस्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप उसको फील कर पा रहे हैं. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. कीप प्रैक्टिसिंग. चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर लिंक्स टू द प्लेलिस्ट ऑफ माई वीडियोज़. ऑल द बेस्ट. गुड बाय.